Welcome to Zenith Civils. Our mission is simple: to convert bulky sociology optional notes into crisp, concise and exam-oriented revision material that helps you score more in less time. आज हम चैप्टर 4 के स्ट्रेटिफिकेशन मोबिलिटी के सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव को कवर करेंगे, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर फंक्शनलिस्ट इनइक्वालिटी को नेसेसरी मानते हैं और वेबर उसे मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं, तो मार्क्स के लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का रूट कॉज ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। आज की क्लास में हम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव क्लास एक्सप्लॉयटेशन, सरप्लस वैल्यू, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और रिवोल्यूशन के कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म और यूपीएससी आंसर राइटिंग पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। Instead of lengthy textbook explanation, we will focus on concept, keyword examples, criticism, and analytical points that will help you write high-scoring optional answer. टारगेट है वो ये फाउंडेशन बिल्ड करना नहीं है, बल्कि आपके जो फाउंडेशन के नोट्स हैं उनको क्रिस्प एंड कंसाइज करके वो वन पेजर बनाना है, ताकि आप एग्जाम हॉल में डायरेक्टली रेप्लिकेट करके आ सके। सो लेट्स मेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिंपल, स्मार्टर एंड बेटर। लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव differs from the functionalist view by emphasizing the divisive rather integrative aspect of stratification. Next point. According to Karl Marx, stratification is determined by relations of production and status is determined by person's position in the very system in terms of ownership and non-ownership of means of productions. So let's write basic tenets or basic features of dialectical approach. Marxist approach की basic features or tenets of dialectical perspective or approach are: first point will be economic interest is the basic of all type of relationship. Second point will be too many classes that were owners haves bourgeoisie and wage earners have-nots proletariats. Third point will be interest of two classes above two classes clash with each other as have exploits have-nots, haves exploits have-nots,
hence a class struggle. Fourth point, haves gets more than its due share, and this accelerates class struggles, which finally lead to a revolution and radical transformation of stratification system. Fifth point, for Marx, class is the basic feature of society, basic feature of society. Sixth point will be, class is a social reality. A group of people with a developed developed consciousness, with a developed consciousness of its existence, its position, goal, and capabilities. Final point, that is seventh point. Class for Marx was a perspective, a method, and concrete reality to understand structure and and stratification of society and culture. तो हमने ये 7 पॉइंट्स लिखे हैं बॉडी में। जब हम वेवेरियन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के पीवाईक्यू देखते हैं कि इस पे क्या पूछा है, तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यूपीएससी इस चैप्टर में हमेशा 10 मार्कर में पूछता है। अगर 20 मार्कर में पूछेगा तो वो वेबर के साथ उसको कंपेयर कराएगा। 10 मार्कर में इसलिए क्योंकि वो मार्क्स से ज़्यादा सोशियोलॉजिकल थिंकर्स वाले चैप्टर से पूछने की कोशिश करता है बजाय दूसरे किसी चैप्टर से। तो वैसे अगर 20 मार्क के लिए पूछेगा तो भी हमारे भी बहुत है। 7 पॉइंट ये हो गए बेसिक फीचर्स हो गए, 1 पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गए 8, 1 पॉइंट कनेक्टिंग लाइन हो गई 9, 5 पॉइंट उसके हो जाएंगे क्रिटिसिज्म के, और 1 पॉइंट हो जाएगा कंक्लूजन। तो कुल मिला के 15-16 पॉइंट्स हो जाएंगे जो हमारे 3 पेजेस को फुलफिल कर देंगे। तो उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम पीवाईक्यू देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ 10 मार्कर में पूछता है। 20 मार्कर में सिर्फ वो कंपैरिजन कराता है, और कंपैरिजन में हम क्रिटिसिज्म नहीं लिखते हैं, अवॉइड करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड क्रिटिसिज्म। फर्स्ट पॉइंट विल बी मार्क्स वेबर criticized Marx. Weber criticized Marx economic determinism and argued that stratification is shaped by class status and party. Second point will be Ralph Dahrendorf argued that authority relations rather than ownership alone
creating domination and inequality. Third point will be Marx Marx two class model overlook the rise of middle classes, professionals and managers. Fourth point will be in India, caste and class have historically existed together. Caste is not merely a ritual system, but also contains element of class and power relations. Limiting a purely economic explanation. Final point in the criticism will be Indian society doesn't fit in Indian society does not fit in Marxian model. Groups like independent workers, employers, white collar and blue collar workers create a diverse class structure beyond capitalist category. Finally, let's conclude the topic. Despite above criticism, Marxian theory remain vital for understanding exploitation, inequality, and power relations. Why requiring integration with contemporary social realities. So this is our ready to use script in question related to Marxian perspective on social stratification or comparison between Max Weber and Marx. So friends, today we converted Karl Marx theory of social stratification into simple revision friendly notes. For UPSC optional, Marx theory is one of the most important framework. कल की क्लास में हम सोशल मोबिलिटी को रिव्यू कवर करेंगे. Its meaning, types, determinants, significance, for understanding how individuals and groups move within the social hierarchy. If this lecture made your revision easier, don't forget to like, share and subscribe to Zen Civils. Keep revising smart, keep scoring higher. आज की क्लास के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. जय हिंद, वंदे मातरम.